हेलो व्यूअर्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जो हम लोग टू डायमेंशनल एरे में सॉल्व करते हैं। टू डायमेंशनल एरे का मतलब ही है कि जिसमें मोर देन वन रोज एंड कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहा हो। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3 ऑर्डर एंड ट्रांसपोज द मैट्रिक्स, विच मीन्स दैट करने का मतलब है कि हम लोग मैट्रिक्स ऑपरेशंस में पढ़ते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो दिस ऑपरेशन इज वेल नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इस ऑपरेशन को करने के लिए हमें भी मल्टी डायमेंशन एरे की ज़रूरत पड़ती है, यानी मोर देन वन डायमेंशन में जब भी डेटा होंगे तभी वो मैट्रिक्स कहलाएगा। और फिर उसके रो के डेटा को कॉलम में हम लोग जब इंटरचेंज कर देते हैं तो कमिंग्स मैट्रिक्स इज वेल नोन एज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 2 into 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेने हैं। वी हैव टू टेक अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3 ऑर्डर। सो टेकिंग हियर n 2 of 3, which means that here 2 row and 3 columns, which means that 2 row and 3 columns, यानी कि रो 2 and column 3. So we are first define here the size of the row and the second one is the size of the columns, I and j. I for the row and j for the columns. No needs extra variable in this program. Now giving a message that enter matrix of 2 into 3 order. अब ये मैसेज यूजर को जाएगा कि हमें किस ऑर्डर में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इंटर करने हैं। तो ए यूजर कैन अंडरस्टैंड कि 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें इनपुट करना है, विच मीन्स हैव अ 2 रो एंड द 3 कॉलम्स। तो डेटा जो होंगे वो हमें पहले रो में देना होगा 3 एलिमेंट्स और दूसरे रो में देने होंगे 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक लूप को चलाते हैं according to the row is 2, so we are executing this loop, first loop, the outer loop, I equal to 0, I less than 2. This loop will execute 2 times, for 0 and for 1. When the value of I will be 2 less than 2 condition will be false, which means that this loop will only execute 2 times for the value of 0 and for the value of 1 only. And after that this loop will decide the row, 0 row and the 1 row, and now we have to put data into their columns and the number of columns should be 3. ठीक है, तो अब है कि हमने एक एक्स्ट्रा लूप्स को इसमें हमने ले लिया, that is the well known as inner loop. j equal to 0, j less than 3. According to the column we are deciding this loop 3 times execute, for 0, for 1 and for 2. In between we are giving the message enter row data enter करनी है हमें, ठीक है। तो रो डेटा एंटर करनी है तो फर्स्ट टाइम रो की वैल्यू होगी 0 प्लस 1, तो यूजर को मैसेज चला जाएगा कि 1 रो डेटा एंटर। तो यूजर कैन अंडरस्टैंड कि हमें 2 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स जो है उसके पहले रो का डेटा को इनपुट करने हैं, राइट। अब आया कि स्कैन एफ और इसमें हमने लगा दिया एड्रेस ऑफ n of i of j। तो अब ये क्या करेगा कि रो विल बी 0 फिक्स हो जाएगा एंड द कॉलम विल एग्जीक्यूट 3 टाइम्स, फॉर 0 then 1 then 2 and the value will be stored at 0 0 0 1 and at 0 2. After that this loop will be complete and then again the outer loop will execute for the value of I, that will be 1, और उसके लिए फिर यहाँ आ जाएगा 1 और again this loop will execute 3 times, 1 of 0, 1 of 1 and then 1 of 2, and these 3 elements will be stored at the particular location, 1 of 0, 1 of 1 and 1 of 2, and after that this condition will be false and stop the execution of this loop. After processing this entire
inner and outer loops, our input will be completed. जैसे ही ये लूप्स मेरा कंप्लीट होगा इनर आउटर दोनों, तो ये क्या करेगा कि इनपुट को कंप्लीट कर देगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनपुट, जैसे ही इनपुट कंप्लीट हो गया, वी नीड्स फर्स्ट लुक, वी हैव टू व्यू what the data we are given and how it will represent in matrix of 2 into 3 order. So giving a message that matrix 2 into 3 order, and the same loop will execute, only the difference is we are printing here tab slash t for tab, which means it will give the space between the column elements, first column, second column, third column elements. It will give a tab spaces, and after that it will change the row, and again for I equal to 1 it will execute 3 times and print the 3 data at the stored location. And finally we needs to process the transpose of a matrix of 2 into 3 order. Same questions के लिए आप transpose compute करने हैं. तो we know that in a case of transpose, the row will be shifted in columns. If we have a row first 1 2 3, then it will transform into the columns, which means that row will be increase and column will be decrease. जैसे ही ये शिफ्ट करेगा, इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 2 into 3 ऑर्डर की है. तो जब ये ट्रांसपोज करेगा तो उस समय में जो मैट्रिक्स फॉर्म होंगे, तो फॉर्म मैट्रिक्स विल बी शिफ्टेड इनटू 3 into 2 ऑर्डर. 3 into 2, रो विल बी 3 and the column will be 2. Row will be 3 and the column will be 2. So we are here starting the outer loop like column. ये देखिए कॉलम 3 टाइम्स चला था, अब मैंने रो को 3 टाइम्स एग्जीक्यूट कर दिया. I equal to 0, I less than 3 and I plus plus, and column will execute 2 times only, j equals 0, j less than 2 and j plus plus. And we have to change the position of row and columns, so the output of simple matrix I was in row and j was in column, but in case of the transpose of matrix, j will be in row and I will be in column, and after that it will print transpose of our matrices. And now we are executing this. One row data enter, I am giving here 1 2 and third element 5. Again it's giving us a message 2 row data enter, which means second row का data मुझे enter करनी है 8 9 and 6. Well, giving a matrix of order 2 into 3 order 1 2 3, this one is the first row, and 8 9 6, this one is the second row, and the 1 2 5 shifted into the columns 1 2 5, and 8 9 6 also shifted into the column. Like this we can take any order of data using a matrix and print the matrix along with the transpose of the matrix. Thank you viewers.